Very good morning to all of you and welcome to the social science class. Yes, but yesterday we have discussed about the chapter 9 geography and the chapter name is life in the natural regions, tropical and subtropical regions. So in this chapter we have discussed about the life in the Amazon basin and started a topic life in a Ganga Brahmaputra basin. Now today we will discuss about the natural vegetation of Ganga Brahmaputra basin. So let us start. See, in this topic natural vegetation, the humid monsoon type of climate with distinct hot and dry periods favor the growth of tropical deciduous trees in the plains. See, in this basin beta, humid monsoon type of climate is there, so that hot and dry season is there. Teak, sal, neem, peepal and important type of trees are also there. Tropical evergreen forest are found in some parts of the Brahmaputra basin and in the Tarai regions, which I have told you yesterday about the Tarai regions. And thick bamboo groves, rosewood, ironwood, siso are the common vegetation here. And in the northern parts, in hilly reaches of basin, some conifers like देवदार, pine and oak grow. नॉर्दर्न पार्ट्स हैं जो उन एरियाज में कॉनिफर्स लाइक नीडल शेप के जो लीव्स वाले ट्रीज हैं लाइक देवदार पाइन एंड ओक ट्रीज and the delta region has found one of the famous mangrove forest of the world, the Sundarbans. In this delta, mangrove forests are also found, one of the famous forest of the world, Sundarbans. And in fact, the delta gets its name for the Sundari trees that grow in the swamps with saline water and clay soil. Sundari trees in area में होते हैं that grow in the swamps also and with saline water and the clay soil. So most of the forest of the river basin have been cleared to provide land for the एग्रीकल्चर. सो मोस्टली फॉरेस्ट को जो इस रिवर बेसिन में फॉरेस्ट है उन्हें क्लियर किया गया टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ. Now we will read about the wildlife of the Ganga Brahmaputra basin. See, in this topic, the Ganga Brahmaputra has rich fauna in its forest areas. The Royal Bengal tiger of the Sundarbans and the one-horned rhinoceros of the Kaziranga forest in Brahmaputra basin are famous throughout the world. These two things are world famous. And elephants, deer, monkeys, wild buffaloes, boars means pigs, are found in most of the forested areas. A large variety of fish like the hilsa, rohu, katla are found in the rivers and lakes in plenty. But these are the species of the fish. अलग अलग टाइप के फिश है लाइक हिल्सा, रोहू एंड कटला. And other aquatic creatures, sea creatures or aquatic creatures like crocodiles, alligators, turtles and the Gangetic dolphin, as well as susu or blind dolphin are found in the lower reaches of river and in Bay of Bengal. So very simple topic was this. Now we will read about the people of the Ganga Brahmaputra basin. See, the Ganga Brahmaputra plain is one of the most densely populated regions of the world. सबसे ज़्यादा densely populated area है ये पूरे world में, this plain. And the environmental factors behind this are, first one is favorable climate, second one is flat, fertile alluvial plains, flat area है, fertile area है, plains है. And next is availability of water. So these are the three main factors. That's why the most densely populated area of the world. Rice and fish are the staple food for the most of the people near the Ganga Brahmaputra basin.
And environmental factors favor cultivation, settlement, industrial and transport developments. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत है, लाइक कल्टीवेशन के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्लाइमेट, वाटर एक्सेट्रा, एंड सेटलमेंट ऑल्सो, इंडस्ट्रीज ऑल्सो, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. So agriculture is the main occupation of the people of these plains, and in areas of higher rainfall in the east, paddy is the main crop. Paddy is the name of the crop. And while in the drier west areas की तरफ जाएंगे, so wheat dominated. In east areas paddy, and in west wheat dominates. Maize, barley and millets are other food grains grown in the northern plains. And among commercial cash crops, jute is grown in the West Bengal. Jute, जो वेस्ट बंगाल की जूट है, वर्ल्ड फेमस है. बिहार एंड असम एंड शुगर केन इज कल्टिवेटेड इन द उत्तर प्रदेश. And oil seeds also are grown in some areas, and in the sloping hills, जहाँ पे slopes हैं, or hills of West Bengal and Assam, tea plantation are also found. Okay, and in some areas of the plain, banana plantations are also seen. Silk is also produced through the cultivation of silkworm in the parts of Bihar and Assam. And terraced farming is practiced on the mountains and the hills. Mountains and hills में terraced farming होती है, so that's why terrace farming is also practiced here. And the two main crops varieties are the kharif or summer crop, and the rabi or winter crop. That means दोनों टाइम में, in summer is kharif and in winter is rabi. दो टाइप की वैरायटी की क्रॉप्स यहाँ अवेलेबल होती हैं. ए थर्ड क्रॉप ऑल्सो जैद इज ग्रोन इन द पीरियड इन बिटवीन. इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम होता है, एक जैद नाम की क्रॉप भी ग्रो की जाती है. एंड द रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सपोर्ट्स मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, एग्रो बेस्ड होती हैं, जस्ट लाइक जो वीट पे, राइस, इस टाइप की इंडस्ट्रीज पे बेस्ड हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे बेस्ड हैं. So see the next, the flat land favors the growth of settlements. Flat areas basically settlements के लिए बहुत best रहते हैं. Many villages are found all around the agricultural land. Towns and cities also have developed in industrial and commercial centers. Now see the most important cities of the northern plains. Main is the national capital Delhi, and the river port and commercial center is Kolkata. Other important towns: Haridwar, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna along the banks of Ganga, and the Guwahati along the banks of Brahmaputra. Okay, this flat land is also favors the development of dense transport network. That means transportation बहुत easy है, flat plain areas हैं, so that's why dense transport network is also here. Roads, railways and inland waterways are well developed. Inland waterways means through the river they can go anywhere and they can send the things or products anywhere. This is called the inland waterways. And the region is also connected nationally and internationally by air routes. And Kolkata is the main port. Delhi is also a main port, but Kolkata is the main port. The rich cultural heritage of people of this basin is reflected in their music, dance, लिटरेचर एज वेल एज आर्किटेक्चर. यहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसमें म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर ऑल्सो. एंड हैंस दिस बेसिन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड देयर आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताज महल ऑफ आगरा एंड रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली. वैसे तो मैनी हिस्टोरिकल मोमेंट्स आर देयर, बट द मेन टू आर ताज महल एंड द रेड फोर्ट. बिसाइड्स दिस इट हैज़ रिलीजियस सेंटर्स लाइक हरिद्वार एंड द वाराणसी, बुद्धिस्ट स्तूपाज एट सारनाथ एंड बोध गया, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल्सो एट काजीरंगा, मानस, जल्दापारा एंड सुंदरबंस, एंड एडवेंचर टूरिज्म इन द अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर्स इन द हिली एरियाज. Okay, and in the northern parts of the basin the area is hilly. Northern part में hilly area ज़्यादा है, so these areas are sparsely, that means वहाँ population कम है. Sparsely populated means population less है. Some tribes live in the scattered settlements. कुछ tribes उसमें scattered मतलब different places पे अलग अलग रहते हैं. Practicing subsistence agriculture or rearing livestock. Subsistence agriculture means for their own livelihood only, सिर्फ अपने लिए, not for commercial purpose.
Okay, but unfortunately the use of mechanized farming and irrigation has adversely affect the soil of the basin. Okay, बट आजकल की जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो गई है इरिगेशन की वजह से बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रहा है इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे, एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर गई हैं और इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है इतना ज़्यादा इन रिवर्स में फेंका जा रहा है एंड मेकिंग देम टॉक्सिक। तो ये रिवर्स बहुत टॉक्सिक रिवर होती जा रही हैं, एंड डिस्चार्ज ऑफ सिटी सीवेज, सिटी का जो वेस्टेज है सारा इनटू द रिवर्स आर पॉल्यूटिंग देम, सो रिवर्स बहुत पॉल्यूट हो रही हैं। एंड सैडली आर सेक्रेड गंगा इज़ एमंग द डाइंग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के टाइम में हम इसे कह सकते हैं कि अगर हमने गंगा को सेव नहीं किया तो ये डाइंग रिवर्स में से भी एक है। दैट मीन्स धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो वी मस्ट लर्न टू लिव इन हार्मनी विद नेचर लाइक आवर फोर फादर्स टू सेव आवर लाइफ गिविंग रिवर्स। ओके, so this was your chapter, and the exercise and the question answers I will send today also. Thank you. Have a nice day.